चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वञ्चाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद अनंत बड़ी साष्टांग बंधव दंडवत जापन करता हूँ। तत्पश्चात मुक्त विराम पवित्र एवं उपस्थित समस्त कृष्ण कृष्ण के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम। हम लोग राधा जी तत्व के बारे में Hare Krishna. So we were hearing about Sri Radharani's Tattva from few days. Sri Krishnadas Kaviraj Goswami first he explained about Lord Krishna's divine Swarup. Lord Krishna is Swayam Bhagavan. Akila Rasamrita Sindhu. ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्वकारण कारणम। परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान सर्व अवतारी सर्व कारण अनंत वैकुंठार अनंत अवतार। So Maharaj is telling that Lord Krishna is the causes of all causes and he is the master of thousands and thousands of Vaikuntha. In Chaitanya Charitamrita we heard about it, especially Brajendrananda Shyam Sundar. Vrindavane aprakrita madana moh kam vedi chahara vasan. पुरुष जोशीत किवा सावर जंगम सर्वचित्त आकर्ष साक्षात मनमथ कृष्ण वृंदावन में अपराधीन Lord Krishna in Vrindavan, transcendental young Madan Mohan. आज जिसके कैसे उपासना होती है काम करते how there is worship. पुरुष जोशीत किवा सावर जंगम सर्वचित्त आकर्ष साक्षात मनमथ। या पुरुष हो स्त्री हो अथवा चलने वाले हो अथवा नहीं चलने वाले सभी Maybe men or women, walking or non-walking beings, for everyone he is attracting. Everyone is attracted by Krishna. Magnet, like how magnet attracts iron very naturally, in the same way Lord Shri Krishna also attracting everyone from his natural transcendental beauty. He has 64 qualities.
चार जो गुण कहा गया, and especially 4 gunas: Rupa Madhurya, Leela Madhurya, Prema Madhurya, Guna Madhurya, Renu Madhurya. सबको आकर्षित कर। ब्रह्मादि बड़े दिक्पाल जिनकी चरण कमल में आकर के नतमस्तक होकर के Even Lord Brahma and other demigods, they come to Krishna, surrender to his lotus feet, and offer their obeisance to Krishna, and they pray for Lord Krishna. Even Brahma, Indra, Shiva, everyone. वही ब्रजेंद्र सुंदर अपने माधुर्य के द्वारा सभी के चित्त को रंग करते हैं। अपने माधुर्य भरे अपनार मन, अपना अपनी चाहिए करते आलिंगन। अपने माधुर्य आदि देकर के स्वयं अपने आप मणि हो जाते। मणिमय So, प्रस्तर में by seeing Lord Krishna himself, he himself become attracted and mesmerized in a jewel of a tile. अपरिकलित पूर्व चमत्कार कारी स्फुरति मम वरियाणि माधुर्य फल अयम कवि हंत वृक्षजं युद्धगीता सर्व उपयुक्त भुक्तो कामे राधिकमो। ललित माधव नाटक में So in the Lalit Madhav drama, Srila Rupa Goswami Pad is explaining this shloka. Krishna has such a beautiful transcendental form. Getting darshan of this is very rare and is very relishable. Where there is conjugal love, that is considered to be highest. So Lord Krishna is telling, by seeing my own form, even I become mesmerized. Like how Shri Radhika, by seeing, Krishna's mind, Krishna's heart will get stunned. So Krishna's Kaviraj Goswami is telling, now we will hear about Srimati Radhika's transcendental form and beauty. Lord Krishna has unlimited powers. So in this way, in Puranas, it has been evidenced that unlimited powers of Krishna, in the three powers are very prominent: Chit Shakti, Maya Shakti and Jeev Shakti. And even that there are three categories: Antaranga, internal Shakti, external Shakti, and Tatastha, the neutral Shakti. The internal powers is called as Swarup Shakti, or internal potency is called as Swarup Shakti. So through this Shri
Radhika, through her prem madhurya, she attracts Krishna and mesmerizes Krishna. कृष्ण सच्चिदानंद सब चित आनंद यही सर्वशक्ति के 3 रूप होता है। आनंद अंश में से क्या प्रकट होता है? राधिनी और सद अंश से संजीवी एग्जिस्टेंस और चित अंश के द्वारा संबित जिसका ट्रांसेंडेंटल नॉलेज प्राप्त करें। राधिनी संधिनी संबित प्रयोजका सर्व संश्रये राधतास परे मिश्रा तोइनो गुणम वर्जिति। Sorry. कृष्ण में आनंदिताते नाम राधिनी हे शक्ति तारे सुख आस्वादे आपन कृष्ण रूप कृष्ण सुख रूप कृष्ण हरि सुविरसादान भक्त गए सुखिते राधिनी कारण राधिनी सारम तार नाम प्रेम आनंद चिन्मय रूप रसरो व्याख्यान प्रेमेर परम सार महाभाव जानी महाभाव स्वरूपा राधा ठाकुरानी। राधिनी शक्ति के द्वारा कृष्ण स्वयं रस आनंद आस्वादन Through Radhini Shakti, Lord Krishna himself enjoys the ras anand, and also for his devotees he makes pleasure through this ras only. भक्त गए सुखीते राधिनी राधिनी के साथ अंश क्या किया जाता है? प्रेम कहा जाता है। राधिनी सार अंश प्रेम और आनंद चिन्मय रूप कृष्ण And the essence of Radhini Shakti is love. कृष्ण के अखंड क्या है? एम्बॉडीमेंट ऑफ कृष्ण आनंद स्वरूप। The embodiment of Krishna is bliss. आनंदमय ध्यास Anandamayo Bhyasat Brahmasutra Sword. आनंद स्वरूप। So Lord Krishna is always blissful, पुतली बना है like a golden doll is done. And what is there in it? Everywhere is gold only. अथवा शर्करा शर्करा माने शुगर शर्करा के द्वारा आपने एक सुंदर पुतली बनाई। And if you make a doll out of sugar, what is there in the doll? It is only sugar. अच्छा कौन सा लोगों के श्रेष्ठ होता है? मिस्टर जल्दी किसमें? सभी में है. सभी में मुख में होना चाहिए ना? बोले नहीं क्योंकि है तो शर्करा से चीनी से सर्वश्रेष्ठ। उसी प्रकार राधा जी की So in the same way, आनंद स्वरूप साक्षात प्रेम स्वरूप राधा Radhika Rani is also the के साथ deity of love. राधा के साथ हमसे साधना प्रेम आनंद चिन्मय रूप रसे राधा प्रेमेर परम सार महाभाव जनी यही महाभाव रूपा राधा ठाकुर वो प्रेम के परम सार जो है The essence of this love is Mahabhav. यदि दुग्ध के यदि गर्म किया जाए Like milk. If you heat the milk, गाढ़ होगा and how much it becomes condensed. गाढ़ होगा घन होगा कंडेंस वो दूध की स्वादिष्ट अधिक The taste of milk is more now because it is even more condensed. थोड़ा हल्का गर्म करके किंतु वह दूध के यदि गर्म करके वाल दे करते करते 10 किलो दूध कितने हो गए? 1 किलो हो गया 1 लीटर वहाँ 10 किलो था और वह दूध घन तो हो गया नाम केवल और बता देगा। So Maharaj is telling that if you take 10 kilos of the milk and start to heat and it will become 1 kilo, it will be so much condensed. Without putting any kinds of ingredients, it is so tasty.
and the name also may be changed, but the thing is it's the same milk which has been more condensed. सामग्री भी डाला जाए जैसे कपूर, इलायची, And you can put some varieties also like camphor, elachi, केसर, cardamom, kesar, saffron हाँ? and sugar. Amrit ke liye kind of banana, special banana. कितने स्वादिष्ट होगा। It will be so delicious. ठीक उसी प्रकार कहते हैं प्रेमे In the और same way, महाभाव। Premer Param Sar Mahabhav Kari. राधा ठाकुर। So the essence, the condensed love is called Mahabhav. महाभाव स्वरूप And the form of Mahabhav is Srimati Radharani. राधा Thakurani. ये राधा तत्व कितने गंभीर और गंभीर, So this Radha Tattva is very deep. गंभीर भी है और गंभीर, गंभीर मतलब क्या? गंभीर, Deep. गंभीर मतलब very ग्रेट great. है। So this Radha Tattva is very great and very deep. एक दिन बात कमी बात कर सकते हैं और गंभीर हो जाते हैं, इसी तरह के है और गंभीर प्रेम की, कृष्ण चिंता की, कृष्ण सेवा की चिंता में लोग डूबे होते हैं। गंभीर कब होता है? राधिका भाव गंभीर, चित्त जहाज राधिका के भाव गंभीर क्या है? गंभीर माने अर्थात कृष्ण सेवा में ही चिंतन में Krishna Sevangi. कृष्ण सेवा Always she is engaged in Lord Krishna's service. Always she is giving pleasure to Lord Krishna, and always she is thinking about Lord Krishna. होकर के कृष्ण सेवा की चिंतन आदि करते हैं। Meaning of Gambhir is becoming strong and staunch and always thinking about Lord Krishna. Like how we do Harinam, while doing Harinam we always think about Lord Krishna's form. When we do Namastak we do thinking, remembering. ठीक उसी प्रकार मेरे कहने की तात्पर्य है राधिका So in the same way Maharaj is telling Radhika Bhav Gambhir. So Bhav is very deep and great. गणसंग नाम बोल रही है केमन से सामानंद रस सिंधु बुझिए एक मैं तो ठाकुर का है राधिका भाव गंभीर, राधिका की किस कैसे सुंदर भावों के So Bhaktivinoda Thakurji is telling that how Srimati Radhika with her beautiful bhaws she is serving Lord Krishna. कैसे सेवा करती है? How she is serving Lord Krishna? श्याम रस पान करती है, इसलिए कहते हैं With the Shamras Pan. Shamras means Madhurya. क्या बोले? Yesterday Maharaj said. श्याम की कराई श्याम रस मधुपान, श्याम रस माने Madhurya. Shringar. श्रृंगार रस, सर्वोत्तम जय श्रृंगार रस मधुर रस पान करा। So it is a Madhur. Shamras means Madhuras and Shringar ras. सर्वांग दिया करे श्री कृष्ण। And she is giving pleasure to Lord Krishna with this Shamras. शास्त्र सबका वास्तव के द्वारा सर्वांग देकर की सेवा नहीं होती। So through Dasya, Sakya and Madhurya you cannot engage all your body parts and do seva of Lord Krishna, but in especially the Shamaras, Shringar Ras, you can engage all your body parts for the service of Lord Krishna. And Radharani's each part has been very beautifully glorified by our Guru Varga, कृष्ण की ही from the toe of the nail to tip of her hair. And through her each and every part, Srimati Radhika is giving pleasure to Lord Krishna. So the Radhika's Angastali means her body is the playground for Krishna always. देवी शब्द के अर्थ है, देवी शब्द के दो अर्थ होते हैं। देवी को What is the meaning of Devi? Devi means two. इतने सुंदर दुतमा Dutama and Parama very Sundari. delightful,
very delightful and very beautiful. and so much effulgence. So much effulgence, very delightful, coming her from her body. देवी अथवा देवी देव शब्द से देवी शब्द में इकारांत स्त्रीलिंग में होता है कि नहीं? इकारांत स्त्रीलिंग, क्या होता है? इकारांत स्त्रीलिंग, देव शब्द का अर्थ क्या है? दिव्यति क्रीडयति, दिव्यति क्रीडयति. The meaning of Devi is Divyati Kridayati. गोपनैक बंधु हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा प्रदानो भवितास्मि भुवोर्दिशोर्मि. कितना सुंदर श्लोक है. कृष्ण के लिए प्रयोग है. वो कृष्ण कैसे पीड़ा आदि करते हैं. So, how Krishna is playing? जितने भी स्त्रियां हैं कृष्ण की रूप माधुर्य आदि देख करके क्या हो जाते हैं? Mesmerized, mad. So all the women are becoming mad just by seeing Lord Krishna's beauty. Even Lakshmi, Sati and other greatest women, they become mesmerized and attracted. They become mad by Krishna's form. गोविंद की इतनी सुंदर रूप, Because Krishna has such a beautiful form. सब स्त्रियां सती साथी जितने भी रमणियां जो है सब क्या हो जाते हैं? All kinds of greatest women will be chanchal. Chanchal means not fixed on their husband. It's called chanchal. Always having dual mind. सभी स्त्रियों को क्या करते? चंचल बना. Even Krishna's, by Krishna's flute sound, all the women will become chanchal. कृष्ण में विशेष ये दो गुण जो है, चार जो गुण जो है, रूपमाधुर्य, लीलामाधुर्य, प्रेममाधुर्य और Venumadhurya. किंतु इसमें दो गुण जो है, In these four guns, two guns are very very highest. One is Rupa Madhurya. रूपमाधुर्य के साथ ही साथ क्या आ गया? Venumadhurya. Rupa Madhurya and Venumadhurya. These two are considered the highest among the four gunas. स्थावर जन्म और समस्त स्त्रियों की भी Even moving and immovable souls, jivas, even they are attracted by this Krishna, चंचल कौन कराते हैं? Radharani. And even Krishna is attracted by Srimati Radharani. ये कृष्ण सभी को जो है चंचल करा देते हैं अपने रूपमाधुर्य वेणुमाधुर्य के द्वारा. और श्रीमती राधिका उनके इतने सुंदर रूप और उनके इतने सुंदर स्वर जो है सुस्वर. So here Maharaj is telling Lord Krishna is attracting everyone through his Venu Madhurya and Rupa Madhurya. But Srimati Radhika, she is attracting even Krishna. That is the specialty of Sri Radhika. कृष्ण का जुड़ाए जीवन. राधा जी की सुंदर सा बात लोग देख करके मैं चंचल हो गया. कृष्ण सबको चंचल कराते हैं और कृष्ण के कौन चंचल कराते हैं? राधा. तो राधा की महत्व. So the glories of Srimati Radhika we are going to hear now. प्रेमेर स्वरूप प्रेमेर परम भाव महाभाव जनी সেই महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी तरुभर मध्य राधिका सर्वाधिका महाभाव स्वरूपो भयम गुणैरति वरी प्रेमेर स्वरूप प्रेम विभागित कृष्णेर प्रेयसी पृष्ठा जगते विदित. राधा जी की स्वरूप वर्णन हो रहा है. साक्षात प्रेम की स्वरूपिका है. प्रेम के द्वारा ही विवाहित. और कृष्ण के जितने भी प्रेयसियां हैं
श्रीमती राधिका जो है सर्वश्रेष्ठ बताया। So Maharaj is telling here that there are so many lovers of Krishna, but Srimati Radhika Rani is the topmost among them. वही महाभाव सर्वगुणी चिंतामणि के साथ और राधा जी महाभाव के द्वारा ही कृष्ण के जो है सेवा महाभाव बिना। And Srimati Radhika Rani is doing service of Lord Krishna through her Mahabhavs. When Lord Krishna was in Dwarka, he was meeting with Rukmini and Satyabhama. Here in Vrindavan, Srimati Radharani's Mahabhav was in the peaks. So at that time Lord Krishna started to see Radharani's action reached Dwarka. Although Krishna was meeting with Rukmini, Lord Krishna got fainted because Radharani's Mahabhav has such powers. There are 6 kinds of symptoms of Mahabhav. Anadi Kalpatra Kalpatra. Tirjak Yoni Prapti Lalasa. Brahmanda Chokalika. ब्रह्मांड जब राधा जी जब विरह में तड़पती है, एक नहीं अनंत करोड़ ब्रह्मांड के जीव सुंदर। So if Radharani starts to tremble from the viraha separation, all the Brahmanda jivas also will get trembled. एक नहीं अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के जितने जीव है उनके सिर सब तड़पने लगते हैं। समझ नहीं पाते, जो मुक्त जीव समझ पाते, बद्ध जीव समझ नहीं पाते। पता नहीं आज हमारे मन कैसे लगता है। So this can be understood by elevated souls. The conditioned souls cannot understand this. महाभाव की जो ऐसे महाभाव में और विरह में कृष्ण के लिए करते क्या ब्रह्मांड एक नहीं अनंत ब्रह्मांड के जीव से चित्त के शरीर करते कृष्ण कहा है स्वयं कृष्ण कहाँ द्वारकापुरी में रुक्मिणी के साथ मिल रहे हाथ परिहास कर। So Lord Krishna is meeting in Dwarka with Rukmini, but here in Vrindavan Srimati Radhika is in Mahabhav Unmad Dasha. Although Krishna was meeting with Rukmini, he just got fainted there immediately. All these things are being mentioned in Shastras, especially in Ujjwal Nilamani. All these things are explained. कृष्णवांछा पूर्ण करे এই কার্যতা महाभाव चिंतामणि राधार स्वरूप ललितादि सकितार काय रूप राधापति कृष्ण स्नेह सुगंधि उद्वर्तन ताते सुगंध देह उज्जवल वरण महाभाव सर्वेण सुमति राधिका और उनकी काय रूप में महाभाव स्वरूप श्रीमती राधिका काय प्रकार मतलब So Lalita and other Sakhis are the expansions of Srimati Radhika. And they are not different from Srimati Radhika. This Lalita and other Sakhis who are there, these Sakhis are the
manifestation of Srimati Radhika's different bhavs. This Lalita Sakhi is Lalita Bhav. Vishakha. V means Vishesh, special. Shaka means branch. So one of the special bhavs of Srimati Radhika is manifested into Vishakha. किंतु 50 जो मूल जो रूप है वो जैसे करके सारे ऐसे करें। किंतु कृष्ण भी कारकपड़ी में भी प्रकाश किया। नारद देख करके तो हैरान हो गए। ये कृष्ण अनंत स्वरूप धारण करके द्वारका में सब मनुष्य के गृह में कैसे प्रेम विहार निकाले और फिर So Lord Krishna, how he took the different forms and was staying with his queens in Dwarka. In the same way, Srimati Radhika also expanded herself and manifested these Sakhis. The equal amongst Radha, same as Radha. मदनाख्य महाभाव, मदन भाव, मोहन भाव। So Maharaj is telling that Srimati Radhika is Srimati Lalita and other Sakhis are almost equal to Srimati Radhika because Srimati Radhika possessed this Madanakya Mahabhav and Lalita and other Sakhis possess this Mohan Bhav. So Maharaj is telling about Udvartan. Yesterday Maharaj said about this Udvartan. Udvartan means one kind of grass. And these four ingredients, Karpur, Chandan, Agru and this grass are mixed together and applied on the body. Even nowadays nobody is doing Udvartan. Udvartan is done at the time of marriage. By Udvartan your body will get effulgence, shining. So Krishna is always Sugandhi Udvartan towards Srimati Radhika. The flow of heart, the melting of the heart is called Sneha, and this is the main symptom of Sneha or love, is heart melting. So three kinds of bath of Srimati Radhika has been mentioned here. Actually, Srimati Radhika is Nitya Kishori.
However, for doing lila, she is showing like this. Balya, Poganda, she's showing like that, but actually she is Nitya Kishori. Before Snan, what is called the first Snan is called Karunamay. Karuna means that when the heart is melted. Krishna. So how Srimati Radhika is merciful. Maharaj is explaining this. She is 3-4 years old, Srimati Radhika. One day she went to the Goshala along with his father Shri Vishvanu. How she was looking, she was so cute and small. Her curly hairs and eyes are very like opened and broad. And her cheeks was very beautiful. And her neck was like a conch. How beautiful it was. And the Radharani went to Goshala along with his father Vrishabhanu Maharaj. At that time, one cow delivered a small calf. And Radharani doesn't know about this. How to feed this small calf, which is a newborn calf. And even this newborn calf is like 2-3 days old. So what did Srimati Radharani did? She collected green and beautiful grass and started to feed it to calf. But calf was not eating. Hard होता है, rough. So the 2 days old born calf mouth is so soft, and the grass is always having the tip of the grass is like a needle. So just by eating this calf started to bleed, her mouth started to bleed. So Srimati Radhika took her cloth and started to wipe the blood. So this is the mercy of Srimati Radhika, Karunamrit. By seeing another's sorrow, the one's heart is getting melted. This is called Karunamrit. So only we say in our prayer, Karunan Karumai Karuna Barite. So what is the meaning of this Karuna? The meaning of Karuna is the seeing the sorrow of this conditioned soul. She is bestowing her mercy upon the conditioned soul. This is called Karuna. Who is bestowing? Srimati Radhika. So, and this Srimati Radhika's eyesight, if it goes towards Krishna, sorry, not Krishna, it's Jiva, and the Jiva will be liberated from the Maya. कोई एक व्यक्ति इतना ही चिंतन करे, ये मैं राधा जी की दासी बनना चाहता हूँ, जब काम होगी बड़ी विश्ववान हो जाए, So in Vrindavan, if anyone just desires that I want to become a dasi, the maid servant of Srimati Radhika, and if this Srimati Lalita Devi, if she listens this of your prayer, that's all, finish. She will just immediately
अपने दल hold you, and she will give it to the Radhika, and she will also write your name in her personal diary, तो उसी and she will give you the service of Srimati Radhika. करुणा So this is the karuna of Srimati Lalita Devi. In this way Srimati Radhika's karuna is being mentioned here by Srila Maharaj. यह कर्णामृत दर्शन कहा जाता है। ये साधारण रूप में स्त्रियां जो है प्रातः काल में जो है स्नान करती है। कहाँ की जल से स्नान करती है? कुएं के जल से। हैं? So normally the women in India take bath, and where they will take bath, they will take bath at the well or a small pond. So collecting this water, and they will take bath, and the men will go far away. Well, so Maharaj is telling here, what is the meaning of this? So in the same way, Srimati Radhika also in her Balya Lila she is doing another snan, another bathing is Tarunamrit Snan is Madhyam. बालक कितने होता है? 1 से लेकर के 5 साल तक बालक समझते हैं। 1 year to 5 years it is considered as childhood, 5 से लेकर के 7 तक and 5 years to 7 is called Pauganda. After that Vaisanti. क्या क्या बोला? Pauganda 1 से 5 तक Pauganda, और 5 से 7 तक बालक Pauganda, वसंती, और बाद में किशोरी, वसंती किशोरी। 7 से 9 तक जो है उसमें जो है वैसंती का 7 से 9 तक बसंती, फिर 9 से आगे तक 10-11 बार तो है किशोरी। किशोरी। So from 1 year to 5 years it is called as child or balak, and 5 years to 7 years it is called Pauganda, and from 7 years to 12 years is called Vasanti, and from 12 years to so on it is called Kishori. कारुण्यमित स्नान प्रथम, दूसरी कारुण्यमित स्नान मध्यम। कोकुंड पार करके मानो वैसंधि में जब वैसंधि में आते तब उनके शरीर की When Srimati Radhika comes to Vaisanti, then her body's beauty and madhurya will be appeared. कृष्ण के लिए ऐसे कहा। Even Lord Krishna also it is said the same thing like this. ये कारुण्यमित स्नान जो मध्यम कहा है, इसमें कहा है जैसे दोपहर के समय स्त्रियां कहाँ स्नान करती है? कोपुर में जाती है। दोपहर के समय जो है वो स्थान निर्जन है। पुरुष लोग स्नान करके प्रसाद पा करके विश्राम करते हैं, और उस समय स्त्रियां निर्जन स्थान में जाकर के कोपुर में स्नान करते हैं। Opal मतलब पहले स्नान कहाँ पर हो गया? कुएं में स्नान, प्रातः काल। दूसरी So स्नान कहाँ Maharaj पर is होगी? telling the first bath will happen in the well, and the afternoon all the women go to the pond and take bath where there is no men. सब लोग जब So there they take स्नान bath. करते हैं, After that they take prasad and they will take some rest. मकान में डाल के, और उस समय स्त्रियां तालाब में जाकर के स्नान आदि करती हैं। So after the morning bath they take prasad and take rest, and again at afternoon they will take bath in the pond. This is called Madhyana Snan. So this Vaisanti, उसमें बालपन में क्या चंचलता है, और फिर धीरे धीरे जब आ जाती बढ़ती, तब धीरे धीरे उनकी चंचलता उल्टा। जब बच्ची जब छोटी रहती है उसके चंचलता कहाँ रहता है? पैर में रहता है। एक क्षण का वो बैठ गई, चली गई। So when
kid is small, कभी कर्णपुर वर्णन किया है, her chanchalata will be in her legs. She cannot stay in one place. वर्णन करते She will always moving these kids. जब छोटी रहती चलना शुरू कर All these things are being mentioned by our Kavi Karnapur. देखो दो चंचलता है, एक मुख की चंचलता, एक And also chanchalata in the mouth, always talkative. तो वो चंचलता, चरण की चंचलता जो है वो ज्यादा बात भी नहीं करती। And if they grow up a little, then the chanchalata will become reduced. रेस्टलेसनेस कहाँ से? Money. आंखों में आता है। काम चलनी So chanchalata means restlessness. So they will be when they come to Vaisanti, or if they grow up a little, their restlessness will become reduced, and the restlessness will shift to eyes. बहुत धीरे से आंख की चंचलता प्रकाश करती है, हमारे प्राण प्रियतम को नहीं है। ये तो थोड़ा बड़ा संपन्न है, इसलिए कहते हैं दारुण मिलो राव स्नान मध्यम, लावण्य मिलो स्नान, लावण्य मिलो धरा तदुपरि स्नान। फिर बड़ी तो गोविंद से लेकर के कहाँ पर आ गई? Vasanti से पार करके Kishori. उसमें भी तीन विभाजन। So after Vasanti also, now we will speak about Kishori. यौवन, भक्त यौवन, Kishori means from 12 years to 16, something like that. जैन धर्म ग्रंथों में सीधा भक्ति विनोद Even in Jaiva Dharma Grantha, all these things are being mentioned वर्णन by Srila Bhaktivinoda Thakur. व्याप्त यौवन, पूर्ण यौवन, What is Yogand, Vyapti Yogand, Purna ये Yogand, समस्त जो है all these things have been mentioned. इसलिए कहते हैं लावण्य मिलो धराय तदुपरि स्नान, निज लज्जा श्यामपट्ट साड़ी परिधान, लज्जा वस्त्र आदि धारण करते। उनकी लज्जा वस्त्र क्या है? श्याम मतलब श्रृंगार कृष्ण के ही मानो सारा अंग में ही लपेट करके रखते हैं। So what is the lajja? The shahi cloth of Srimati Radhika is Shyam, Krishna. पट्ट साड़ी परिधान, कितने सुंदर परिधान, रमणी शिरोमणि विश्वभानु नंदिनी नीलवसन परिधान। ये नीलवसन क्या है? मानो साक्षात कृष्ण के जो है सारे अंगों में जो है निज लज्जा पट्ट सुंदर पट्ट वस्त्र के द्वारा ही सारे अंगों के जो है कृष्ण अनुराग द्वितीय अरुण वसन नैमानि पंचलिका। So we got a hint here. Srimati Radhika Rani wears a blue sari. What is this blue symptom stand for? It is for Krishna himself. Krishna himself becomes a sari for Srimati Radhika. अंगे विरूपण कृष्णे उज्ज्वल रस मृग श्री मृगमदे विचित्र कलेव तच्छन्नमान ब्रह्म धम्मिल विन्यास धीरा धीरात्मा गुण अंगे पट्टभास राग तंबूल रागी उदरोज्ज्वल प्रेम कुंठिल नेत्र जुगली कज्जल सुदीप्त शक्ति भाव वर्षादि संचारी ऐसा भागभूषण सब अंगे भरी तिलकंचिलादि भाव विंशति भूषण पुनश्री पुष्पमाला सर्वांगे पुरी सौभाग्य तिलक चारु ललाटोज्ज्वल प्रेम वैचित्र रत्न हृदय तरल
So Radharani is decorating herself. How she is decorating is very beautifully mentioned here in this shloka. So all these things are being mentioned in Ujjwal Nilamani Grantha. Maharaj is telling this. So the 7 Alankars of Srimati Radhika. इस प्राकृतिक जगत में तो है ही क्या है इसे लोग ही आप चिंता लोग जानते हैं ये कर देखिए उज्जवल निलमणि ग्रंथ नहीं पढ़ने पर इसको आपके समझ में नहीं आएगा. So you will not understanding all anything like this until and unless you read this spiritual book called Ujjwal Nilamani. ये भाव से कुछ जो है प्रकट होता है कुछ अंग से भी. All these paraphernalias are being manifested from the body of Srimati Radhika, and some paraphernalia are also manifested through her bhavs. Ujjwal Nilamani. जैसे उज्जवल निलमणि ग्रंथ नहीं पढ़ोगे ये शब्द ही मात्र आपके पास रहेगा. जैसे मैंने कहा कृष्ण जी भाव. So Maharaj is telling that if you do not read Ujjwal Nilamani Grantha, only sound is there with you. The real enjoyment or practical things you cannot get. You have to read Ujjwal Nilamani Granth to understand all these things. Chamaradulai. So even Bhaktivinoda Thakur is telling in the Kirtan, Nana Vida Alankar Kore Jhagamal. इसको हाथ करते हाथ करते गेला किसको करते हैं इस मतलब एक उदाहरण के द्वारा हमारे So our Rupa Goswami Pad is mentioning in Ujjwal Nilamani Grantha. So how Srimati Radhika is putting the tilak, that is called Saubhagya Tilak. All these things have been mentioned by Srila Vishwanath Chakravarti Pad in Sri Krishna Bhavanamrita Grantha. How Sri Radhika is taking bath, after bath the each Sakhis are decorating the ornaments to Srimati Radhika. By seeing all these alankar decorations, Krishna is also getting uddipan. And Radharani will be observed in bhav, the Krishna's milan and uddipana. The adhikari people will read these kinds of grunts, will read these books, and without this entering to the kingdom of bhajan is little difficult. So you can make this calm krodh, the lusty and anger can be controlled just by following this one verse, Vacho Vega Manasa Upadeshamrit, first verse. Just by reading Upadeshamrit it takes 50 years, Maharaj is telling. So when you will read all these things, just by reading Upadeshamrit, if it is taking 50 years, then when you will read all these books, Ujjwal Nilamani and other granths, our acharyas have written all these books. For whom they have written these books? Just to keep it in the storeroom? No. We have to read. The acharyas published these books to awaken you all, awaken us.
We have to read these books. आसन चित्त मन को स्थिर करके काम क्रोध आदि Just by से दूर करना। maintaining the concentration, we have to read this. Then आदि चिंतन करना। this lust and anger will get away also. चित्त को स्थिर करना होता है। प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पहले हरिनाम करो। So your mind should be stable. हरिनाम करते कि नहीं? पहले In the morning time you have to do उठ करके morning, you should wake up and you should do Harinam. चित्त के जितने Make छोड़ your दो, mind stable. उतना ही चलता है। If you leave your mind, it will keep on running here and there, here and there, here and there. प्रातः काल में उठ करके स्तव स्तुति So in the morning time you should do Stav Stuti like we do, हरिनाम करते हैं, स्तव स्तुति आदि, and Harinam, प्रार्थना prayers, some prayers. है? तुम जितने मन में छोड़ दोगे वो उतना ही And if you leave the mind, and it will be running always. You cannot control it. You have to try. You have to try, and again one day you will definitely win. छोड़ दो, सब अभी हो गए। Or if you cannot do this, then इसका भजन आरती हो गई, व्यवस्था हो गई कि नहीं? कोई है? खाली ले आओ, गंदगी ले आओ। हैं? जाओ। हाँ, सेवा। नाम में कुछ नहीं है। सेवा करो। हैं? so Maharaj is kidding someone here. You don't have ruchi in the Nam, go and do seva. नाम दो चार दिन करने के बाद सिर में दर्द हो जाएगा तो He is telling I will get sleep, Maharaj. प्रकृति का भाव है, Lack of pious Sukriti. All these things happen because lack of Sukriti. So by doing seva, your Sukriti will be increased. Then you will get ruchi in the Nam. मन को जितना नहीं छोड़ दो वो उतना ही चलता है। And if you leave the mind will keep on running like a mad horse. इसलिए इसको उसको बंधन करते हैं। So all these things are explained in this Grantha very beautifully. विभाग विंशति भूषण गुणश्री पुष्पमाला सर्वांगे भूषि सौभाग्य तिलक चारु ललाटे उज्ज्वल हेमवचित रत्न हृदय कर मत्तवया सखी पंडिकरन्ना कृष्ण लीला सखी आस्पाद निजांग सौरभावै गर्भ पर्यंक ताते बसी गाते सदा चिंत कृष्ण संग कृष्ण नाम गुंज सवतंस काने कृष्ण नाम गुंज प्रवाह वचने कृष्ण के कराए श्याम रस मधुपान निरंतर पूर्ण करे कृष्ण सर्व काम कृष्ण विशुद्ध प्रेम रत्न आकर अनुपम गुणगान पूर्ण परेव सदा सर्वदा राधा जी कृष्ण की सेवा के लिए So Srimati Radhika Rani always she is doing the service of Lord Krishna. विशुद्ध कृष्ण विशुद्ध प्रेम रत्न आकार Krishna Vishuddha Prem Ratner Akam Anupam Gunagan Purna Pariman. So Radharani's guna character is called Anupam, unparalleled. So we'll continue tomorrow. Vanchakalpatarubhesha Kripa Sindhubhesha Patinam Pavanebhyo Vaishnavin. Devotees, please forgive me. Today I am unwell, so I am not able to do translate very properly. Maybe by evening I will recover and I will give very nice translation. Hare Krishna, Dandavat Pranam.